हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक एनिमल किंगडम के बारे में। जो आर एच विटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिए थे। अकॉर्डिंग टू हिम द होल लिविंग वर्ल्ड, he classified, R.H. Whittaker classified living organisms into mainly five kingdoms like Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, and Kingdom Animalia. And in this class and in video lecture series, we will discuss about the Kingdom Animalia and different features of Kingdom Animalia. तो आज इसी क्लास में हम किंगडम एनिमलिया के बेसिक फीचर्स और जो जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स है, आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब तक बोला जा रहा है कि 1.8 मिलियन, 18 लाख से भी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टमैटिकली क्लासिफाई कर चुके हैं। तो आउट ऑफ 1.8 मिलियन, आउट ऑफ 1.8 मिलियन organisms, more than 1.2 million organisms belongs to kingdom Animalia. Belongs to kingdom Animalia. तो इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि किंगडम एनिमलिया को डिफरेंट फाइलम में हम लोगों ने डिवाइड किया है। विल स्टडी अबाउट दोज फाइलम्स आल्सो इन डिटेल्स। तो किंगडम एनिमलिया के जो बेसिक फीचर्स है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो क्लासिफिकेशन किए हैं हम डिफरेंट फाइलम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। दिस आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल एनिमल्स। कहीं कहीं थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, बट most of the animals, we are going to discuss the features, basic features of all animals. So we know that the animals are heterotrophic eukaryotic organisms, and animals are mostly multicellular in nature, and they lack cell wall. So we'll discuss every feature one by one. We'll discuss. As I said, animals are the uh, heterotrophic organisms, or they show heterotrophic nutrition. Heterotrophic first feature is we are going to discuss heterotrophic heterotrophic nutrition. वी नो दैट, हम लोगों को पता है कि जो न्यूट्रिशन होता है मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रोपिक autotrophic nutrition, another one is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means those organisms produce their own food, produce produce their own food through process of photosynthesis.
दोज ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो मेनली प्लांट्स लाइक algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperms are known as the photosynthetic plants. Some protists also show photosynthesis, so they are also comes under autotrophic nutrition or phototropic nutrition. And those organisms who are dependent on other organism for their food, they are known as heterotrophic organism. And this type of nutrition जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन प्लांट्स के ऊपर, अलग एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, तो वी आर नोन एज द हेटरोट्रोपिक organism and our nutrition is known as heterotrophic nutrition. And heterotrophic nutrition mainly divided into three types. One is like uh, our herbivores. The second type is like carnivores, and the third one is like omnivores. Omnivores. So herbivores means those animals who are dependent on plants for their food, like deer. They only eat leaves, grasses, or plant parts. They are known as herbivores. Carnivores means they eat other animals. जो अदर एनिमल्स को फूड के हिसाब से खाते हैं, उन लोग हम उन एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कह सकते हैं. और omnivores means those animals shows the characteristics of both herbivores and omnivores. Shows the characteristics of both herbivores and omnivores means वो प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं. लाइक ह्यूमन इज एग्जांपल ऑफ omnivores. Human can eat plant and plant products like leaves, spinach, and fruits. These are the plant products, and human can eat meat also. So a human is considered as omnivores. Other some animals are so the property of a omnivore, uh, omnivores also. Then this is one basic characteristics of all animals. The next characters we are going to discuss is holozoic mode of nutrition. The second one is the second one we are going to discuss is second property is second basic feature is holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition means nutrition involving engulfment of a whole or part of the plant or animal, either in solid or in liquid state, is known as holozoic mode of nutrition. जो हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मीन्स द फूड व्हाट वी ईट, जो हम एनगल्फमेंट करते हैं. एनगल्फमेंट मीन्स निगल लेना. फूड को जब हम निगल लेते हैं, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Engulfment of food particles either in solid form or in the liquid form is known as holozoic mode of nutrition. And holozoic mode of nutrition involves basically four processes. Holozoic mode of nutrition involves four processes. That is like the first is ingestion. The second one is the digestion. Third one is the absorption, and the fourth one is like assimilation. Okay, these are the
some processes, some of a holozoic mode of nutrition. Ingestion means intake of a feed. Ingestion means intake of a food, either in solid form or in liquid form. This means intake ऑफ फूड। हम जब फूड को इनटेक करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज लाइक डाइजेशन आफ्टर इंजेशन ऑफ फूड। जब हम फूड खा लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ले लेते हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? डाइजेशन। एंड इन ह्यूमन केस इफ यू विल से द डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली। माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, माउथ। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन इन नीट एंड हायर स्टडीज आल्सो, इज देयर एनी डाइजेशन ऑफ फूड इन ओइसोफेगस रीजन? द आंसर इज देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड इन ओइसोफेगस रीजन। फूड का डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, लेकिन कोई डाइजेशन प्रोसेस ओइसोफेगस में नहीं होता है। पहले माउथ से शुरू होगा, वो धीरे उसके बाद ओइसोफेगस होके स्टोमक में चला जाएगा फूड, वहां से फिर से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर इंजेशन द प्रोसेस इज लाइक डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स आवर फूड इज मेनली complex in nature. Complex means it is consist of carbohydrates, fats, like proteins, micronutrients, vitamins। ये सारे प्रोडक्ट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट इन डाइजेशन प्रोसेस दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स आर ब्रेक डाउन इनटू simpler forms simpler forms. This process is known as digestion. And after digestion the process occur। डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन जो फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपलेस्ट हो गया, उसी फूड हमारे ब्लड में जाके डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई होता है। डिफरेंट ऑर्गन के पास, सोर्स से सिंक के पास जाता है। उस प्रोसेस को जहां जहां से फूड ऑब्जर्व होके ब्लड में मिल जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्प्शन ऑफ अ फूड। ऑब्जर्प्शन ऑफ अ फूड। फूड ऑब्जर्व होके डिफरेंट ऑर्गन को जाता है। जो स्टोर्ड फूड है इन ह्यूमंस, दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन इन लिवर। एंड व्हेन फूड, सिंपलेस्ट फूड ऑब्जर्व होता है जहां से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्प्शन। आफ्टर ऑब्जर्प्शन द प्रोसेस इज असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन्स असिमिलेट हो जाना। मतलब क्या? वो जो फूड ऑब्जर्व हो गया, वो डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट बॉडी फंक्शन के लिए यूज होना, की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। तो होलोजोइक मोड न्यूट्रिशन में 4 सब प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस जो है हमारा इंजेशन है, मीन्स इनटेक ऑफ अ फूड। देन डाइजेशन ऑफ अ फूड। डाइजेशन ऑफ अ फूड मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। देन absorption of those simplest food into the blood. Then assimilation means use of those absorbed food into different functions of body is known as assimilation. The next characteristics we are going to discuss is eukaryotic nature of animals. We know that, uh, one second, the next character is like eukaryotic nature. We know that organisms are mainly divided into two, uh, no, two types of organisms based on their development, like eukaryotic eukaryotic organism and prokaryotic organism. Prokaryotic organism.
Eukaryotic organism, the prokaryotic, the lower living organisms are prokaryotic in nature. Prokaryotic organism means the nucleus is not well developed. जिन organisms में nucleus is not well developed, those organisms are known as prokaryotic organism, and those organisms in which nucleus is well developed, those organisms are known as eukaryotic organisms. And all animals are eukaryotic in nature, because in all animals nucleus is well developed. The next property we are going to discuss is multicellular nature of animals. You note that all animals are multicellular. All animals are multicellular in nature. The next feature we are going to discuss is our growth. Growth. What do you mean by growth? Growth means the increase in body mass, increase in body volume, increase in body shape is known as growth. जब बॉडी का वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, जब बॉडी का मास में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, तभी हम बोलते हैं कि एक बॉडी व लिविंग ऑर्गेनिज्म का growth हो रहा है. And in animals growth is definite. If question will arise, question अगर पूछता है कि which type of growth in animals, then you can answer definite growth is seen in animals. तो definite growth क्या होता है? हमारा जो growth है two types का है. Two types of growth seen. One is indefinite growth, another is the definite growth. एक indefinite growth है, एक definite growth है. Indefinite growth means unlimited growth. Unlimited growth. It is mainly seen in plants. कहीं कहाँ पे दिखाई देता है? प्लांट्स में. प्लांट्स में क्या होता है ना, वो प्लांट होल लाइफ ग्रोथ करता रहता है. क्योंकि आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, जब हम एक प्लांट की किसी ब्रांच को कट करते हैं, उसी ब्रांच से नई ब्रांच की डेवलप हो जाता है. तो प्लांट्स का ग्रोथ जो होता है इनडेफिनाइट ग्रोथ होता है, वो होल लाइफ टाइम ग्रोथ करता रहता है, कभी उसका ग्रोथ रुकता नहीं है. बट इन एनिमल्स द ग्रोथ ऑकर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है. मीन्स फिजियोलॉजिकली स्टॉप होता है. आइदर उसका बॉडी मास बढ़ सकता है, वेट बढ़ सकता है, लेकिन वो जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, उस टाइप को ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट ग्रोथ बोलते हैं. और डेफिनेट ग्रोथ इज मेनली सीन इन animals. And there is one important point I am going to say you. You should note this point. There is a type of growth seen in some animals that is known as metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ना, sometimes the adult forms are remarkably different from their younger ones, about which we will study later. But you should note this here only. Sometimes क्या होता है ना, जो एनिमल्स का यंग फॉर्म है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं पहले क्या, जाइगोट से डेवलप होकर धीरे धीरे यंग स्टेज में आते हैं, उसके बाद एडल्ट स्टेज में आते हैं, उसके बाद ओल्ड स्टेज में आते हैं. समटाइम्स क्या होता है ना, जो एनिमल का young stage है, those are different than the adult stage, and this type of development is known as metamorphosis. For example, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो कैटरपिलर है,
कैटरपिलर है वो डेवलप होता है किसमें? बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई में this caterpillar is the young stage and butterfly is the stage after caterpillar stage. And caterpillar stage, the stage is fully different from this butterfly stage. And when caterpillar is developed into butterfly, the process of development is known as metamorphosis, known as metamorphosis. And we'll study later there are different types of metamorphosis. ये जो metamorphosis है ना, metamorphosis डिफरेंट टाइप्स का मेटामॉर्फोसिस है, जैसे कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज नोन एज होलो मेटाबोलोस, होलो मेटाबोलोस। होलो मेटाबोलोस क्या होता है ना, जब पूरा बॉडी कंप्लीटली एक डिफरेंट टाइप ऑफ एडल्ट में फॉर्म होता है, उस टाइप का मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं? holometabolous. And the holometabolous example is this caterpillar and butterfly stage is the example of a holometabolous stage. And some other type of metamorphosis is like hemimetabolous, which is seen in grasshopper, and ametabolous also, which is seen in silverfish. Ametabolous means क्या होता है? Ametabolous means the younger stage is similar to the adult stage. There is no metamorphosis, and ametabolous stage is mainly seen in silverfish. We'll discuss all these things in the kingdom Arthropoda, because mainly metamorphosis seen in insects, and insects are belongs to phylum, sorry, not kingdom, phylum Arthropoda, sorry, phylum Arthropoda. Then the next property we are going to discuss is like locomotion in animal. Locomotion in animal. The next property is locomotion. You should note all these things. लोकोमोशन क्या होता है ना, मूवमेंट ऑफ एनिमल। एक जगह से जब एक एनिमल दूसरे जगह पे मूवमेंट करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज नोन एज लोकोमोशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। Those animals can be according to locomotion, animals can be divided into two types. One is locomotory animals. This means those are capable of locomotion, those are capable of movement from one place to another place. And some animals are, and some कुछ animals होते हैं जिनको हम बोलते हैं sessile animals. Sessile animals, they are not able to locomote, not able to locomote. वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को लोकोमोट मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। उस टाइप को एनिमल को हम क्या बोलते हैं? सेसाइल एनिमल बोलते हैं। और सेसाइल एनिमल मेनली बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि सेसेल एनिमल्स क्या होते हैं। जब हमारा एनिमल डेवलप हो रहे थे, इवोल्यूशन हो रहा था, तो यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओशन। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्वाटिक एनवायरनमेंट टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन। तो जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो पहले जो एनिमल्स थे वो एक सरफेस के ऊपर, एक ये अगर एक सरफेस है ओशन फ्लोर पे और सी में, उसी फ्लोर को अटैच होकर रहते थे, इसी फ्लोर को अटैच होकर रहते थे। एंड द एनिमल
attached to the floor or surface is known as substratum. सबस्ट्रेटम। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, कुछ एनिमल्स उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, तो उन्होंने धीरे धीरे मूवमेंट करना शुरू कर दिए और वो मूवमेंट करने लगे, तो उसके बाद लोकोमोटिव एनिमल का डेवलप हुआ। एंड दोज एनिमल्स व्हिच आर ओनली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम आर नोन एज sessile animals. Here I said those animals are known as sessile animals. Like uh, belongs to kingdom phylum Porifera, sorry, phylum Porifera, and example is sponges. Next, the next property of animals, the next basic feature of animals is sensory system or nervous system. Or well, you know that uh, from lower to higher animals, the nervous system or the sensory system developed from lower animals to higher animals. Higher animals basically show elaborate sensory and neuromotor mechanism, and they are aware of their surrounding. जो एनिमल्स है, आज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के पास क्या होता है, वेल डेवलप्ड डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और जिसको हम बोलते हैं सेंसरी सिस्टम है। ये सेंसरी सिस्टम हमको क्या किसमें हेल्प करता है? सेंसरी सिस्टम हेल्प्स अस टू सेंस आवर एनवायरमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है ना, जब एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होता है, चाहे वो गुड चेंजेस हो चाहे वो बैड चेंजेस हो, अगर किसी एनिमल के ऊपर अटैक कर रहा है, किसी एनिमल अपने फूड को ढूंढने निकल रहा है, तो वो अपना सेंसरी सिस्टम यूज करता है। तो एनवायरमेंट को सेंस करने के लिए हमारे पास सेंसरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है। एंड द सेंसरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड और डेवलप्ड फ्रॉम highly developed from lower animals to higher animals. And in higher animals, endocrine system also present. Endocrine system means there is control on body through different chemicals, and this is known as endocrine system. And the last property we are going to discuss here is the last property is reproduction. The last property is reproduction. You note that all animals, animals show sexual reproduction, except some lower animals which are belongs to phylum Porifera. Which animals belongs to phylum Porifera? They only show asexual asexual reproduction. Some animals, those are belongs to phylum Porifera only, or lower animals show asexual reproduction, and asexual reproduction in animals mainly occur through the process like fragmentation and budding. The process like fragmentation in budding, not only in porifera, सिर्फ porifera नहीं, जो भी animal asexual reproduction show करते हैं, they only reproduce through process like fragmentation and budding. These all are the basic features
or basic characters of all animals. These characters are same in all animals. That means all animals are eukaryotic in nature, all animals are multicellular in nature, all animals show holozoic mode of nutrition, and a holozoic mode of nutrition is mainly four processes are there, like ingestion, digestion, absorption, and assimilation. Animals show definite pattern of growth. Animals have power of locomotion. Those animals which are unable to locomote are known as sessile animals. And animals have well developed nervous and sensory control system, and animals are mainly reproduced through sexual reproduction. The animals are sexual. Some lower animals only show asexual reproduction, and asexual reproduction occur through the process like fragmentation and budding. These all are the basic features or common features of on all animals. Next, we will discuss some important concepts of animal kingdom. Uh, Let me erase all these things. Now we'll discuss some point. You should know these points like metazoa. Metazoa. Note all these things in your notebook. Metazoa means these multicellular. We discuss animals are multicellular eukaryotic organism. These multicellular eukaryotic organism or animals are known as metazoa. Are known as metazoa or meta जोआंस these जिन एनिमल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए those animals all eukaryotic and multicellular organisms having holozoic mode of nutrition are known as metazoans. Are known as what? Metazoans. Based on the complexity of different organs complexity, क्योंकि जब एनिमल डेवलप हुआ जैसे प्लांट में पहले algae, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स डेवलप हुए हैं। तो जो डेवलपमेंट हुए एक दिन में सारे डेवलपमेंट नहीं हुए। algae में वो थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, रूट लीव्स एंड स्टेम का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा उसके बाद algae में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, लेकिन एंजियोस्पर्म में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो डेवलपमेंट इवोल्यूशन के रास्ते में थोड़ा डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। पहले लोअर प्लांट्स क्रिएट हुए, उसके बाद लोअर प्लांट्स मोस्टली एक्वाटिक थे, उसके बाद प्लांट्स का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आया। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पहले टेरिडोफाइट्स आया जो कि बिलोंग्स टू बोथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट। ऐसे ही देन जिम्नोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ। पहले जो algae, bryophytes and pteridophytes, they are seedless and flowerless, but angiosperm and gymnosperms are flower having flowers and seeds. So डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है। ऐसे ही जो एनिमल्स है, एनिमल्स में जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स ह्यूमन, ह्यूमन के पास जैसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुए हैं, जो लोअर एनिमल्स लाइक those animals belongs to phylum Porifera, like Spongilla, different sponges, Cycon, Euspongia, are not well developed like humans. तो जो डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे लोअर एनिमल से हायर एनिमल के तरफ वेल डेवलप्ड होते चला गया है। तो जो डेवलपमेंट है, तो ये मेटाजोन्स क्या है ना, ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सारे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? मेटाजोन्स बोलते हैं। बट बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन द, ये क्या हुआ, मैंने क्या बोला यहाँ पर? बेस्ड ऑन दी, क्योंकि जो लोअर एनिमल्स है उनके ऑर्गन्स में जितना कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देता है, हायर एनिमल्स की ऑर्गन्स में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देता है। वी कैन नोटिस हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इन हायर एनिमल्स। जो मेटाजोन्स है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ
complexity of a organization, metazoans are mainly divided into two types, like one is parazoa and the second one is eumetazoa. Note all these things. These are the concepts. Parazoa. Parazoa means primitive animals. Para means not primitive animals. Parazoa are mainly known as puriferans are known as parazoa, or sponges are the only parazoa. Parazoa means equivalent to animals. Para means equivalent. Zoa means animals. Parazoa are mainly said as equivalent. Equivalent to animals, equivalent to animals. And eumetazoa means newly developed. And developed animals are known as eumetazoa means developed animals includes, and parazoa mainly includes, parazoa mainly includes phylum porifera, but after porifera, all other animals are known as, or other phylums are known as eumetazoa. Eumetazoa include rest animals in which the cells are organized into structural and functional units called tissue. जिस एनिमल्स में क्या होता है ना, सेल्स आर डेवलप्ड इनटू टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटाजोआ बोलते हैं। सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिन एनिमल्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोटिस किया जाता है, उन सारे एनिमल्स को हम किसके अंदर कैटेगराइज किए हैं, यू मेटाजोआ के अंदर कैटेगराइज किए हैं। तो eumetazoa, so eumetazoa contain animals from phylum Coelenterata, phylum Coelenterata to chordates, to chordates. These all animals which are belongs to Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Aschelminthes also known as Nematohelminthes, then Annelid, then Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata, all are belongs to the group Eumetazoa. Belongs to group Eumetazoa. Then we will study about the basic of classification. हमारा मैंने जो पहले बताया है आप लोगों को, जो हमारे एनिमल्स, कितने एनिमल्स अब तक हम क्लासिफाई किए सिस्टमेटिक के अंदर, मोर देन 1.2 मिलियन एनिमल्स को हम लोगों ने क्लासिफाई कर चुके हैं। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है डिफरेंट फाइलम में, मैं यहाँ पर आपको पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा। जो हमारा एनिमल किंगडम है, जो हमारा एनिमल किंगडम है, जो हमारा हमारा एनिमल किंगडम classified into different phylums like phylum porifera. We'll discuss, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फाइलम्स के बारे में। देन फाइलम Coelenterata, then Ctenophora, then Platyhelminthes, then Nematohelminthes, then Annelid, then Arthropoda, then Mollusca, then our phylum Echinodermata, then Hemichordata, then Chordata. There are mainly how many phylums? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. We divided all animals under these 11 phylums. And another phylum, which another group or phylum, I can say protozoa. Proto, protozoa. Proto means primitive. Primitive means first animals. Zoa means animals, primitive animals, which are classified as protozoa. They are male, and these protozoa are mainly belongs to kingdom Protista. They are also have the features of animals. The group Protozoa, the animals present in the group Protozoa, they have the features of animals, but they are unicellular in nature. So they are placed in the kingdom Protista, but they are known as primitive animals. Primitive animals. मतलब जो एनिमल का डेवलपमेंट हुआ है पहले प्रोटोजोआ से ही हुआ है तो these all are the phylums which belongs to kingdom Animalia, and now we'll see the basic of classification. बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स जो इतने सारे फाइलम्स है उनके अंदर बहुत सारे एनिमल्स है जो किस किस बेसिस पे किस किस कैरेक्टर को देखकर हम एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड किए हैं, डिफरेंट फाइलम के अंदर उस एनिमल को प्लेस किया हुआ है, उस बेसिस को हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम हेडिंग दे दीजिए बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, there are some basic characteristics on the basis of which, जिसको बेसिस करके हम लोग डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट क्लास में डिवाइड डिफरेंट फाइलम के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। तो दोज आर लाइक एंड दोज कैरेक्टर्स आर लाइक विल स्टडी वन बाय वन, बट आई एम राइटिंग, मैं पहले वो सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। द फर्स्ट कैरेक्टर इज लाइक लेवल ऑफ level of organization. Level of organization. The second character is like complexity. The second character is like pattern of complexity. Patterns of comple complexities. Pattern of complexities of various organ system. Then the third basic third basic character is like body symmetry. Third one is the body symmetry. The fourth character is the germ layer. Germ layer. Germ layer. It is the embryonic tissue. Primary embryonic tissue is known as germ layer. Fifth basic character is the coelom. We'll discuss in detail what is germ layer, what is coelom. Discuss in detail in next class maybe. In one class we cannot हम complete नहीं कर सकते, ये थोड़ा समझने की बात है। We'll study in details. तो दो क्लास लेकर ये सारे बेसिक फीचर को हम कंप्लीट करेंगे। The fifth one is the coelom. Sixth one is the segmentation, presence or absence of a. Sixth one is presence or absence of segmentation. The seventh one is the presence or absence of notochord.
presence or absence of a notochord. These are the main basic characters on which basis we classified different animals into different phylums. I already said you all phylums which are belongs to kingdom Animalia. We on these basic characters, we divided different animals in different phylums. And we'll start the first feature used for the basic of animal classification is the level of organization. The first we are going to study the level of organization. The first character we are going to study is the level of level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता है जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी हमारा कंसिस्ट हुआ है, द बेसिक द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। और सेल डेवलप हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है किसी में, सेल डिफरेंशिएट हुआ है टिश्यू में, और टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गन, and then from organ to organ system। तो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे है। तो पहले सेल क्रिएट हुआ, बस सेल डेवलप हुआ, सेल कुछ सेल्स ने टिश्यू डेवलप किया, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट? ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम अरेंजमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कैसे सारे सेल्स किस लेवल पे अरेंजमेंट है, किस किस पैटर्न में अरेंजमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस लेवल ऑफ देयर आर फोर टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इन एनिमल्स। कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन नोटिस? देयर आर फोर टाइप्स। चार तरह चार टाइप के four types of level of organization were noticed in animals, that is cellular level, of organization. The second one is the tissue level, the third one is the our organ level of organization, fourth one is the organ system level of organization. The fourth one is the organ system level of organization. Cellular level of organization means cells are the basic unit of this level. Cells are the basic. We know that cells are the basic structural and functional unit of life. Life means of organism. So, in cellular level of organization, we can only notice different types of cells are arranged or organized or aggregate to form a living body or to form a living organism, is known as cellular level of organization. The cells are arranged as loose cell aggregates, but they don't form any tissue. तो इस टाइप ऑफ लेवल जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारे फंक्शन सेल्स ही करते हैं, और सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यू। कोई सेल टिश्यू के डेवलप नहीं करता है। तो ओनली सेल्स आर नोटिस्ड इन दिस टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड द फाइलम पोरीफेरा, फाइलम फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा
So this type of or this level of a body organization. Then the next one is the tissue level of a body organization. Tissue क्या होता है? Tissue means टिश्यू कैसे फॉर्मेशन होता है? जब कई सारे सेल्स सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन, दीज आर सेल्स having what? Same structure and same function. जब कई सारे सेल्स, बहुत सारे सेल्स having same structure, same shape, size and having same function, arranged and do same function, they are called as tissue. They are called as what? Tissue. When in a living organism or in animal, these cells forms tissue, and this type of level of organization is known as tissue level of organization. And in a tissue level of organization, we cannot see any organ or organ system, because मैं आपको पहले ही बताया हूं कि पहले सेल से सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन होता है. So in tissue level of organization, we can notice different tissue in these organisms, and the phylum Coelenterata and Ctenophora shows this type of level of body organization. The next one is the organ level of a body organization. When tissue are grouped together to form organ, this is called organ level of organization. What happened here? In organ level of organization, tissue are grouped. Tissue are grouped to form organ, and this type of a level of organization is known as organ level of organization. And we can notice this type of a body organization in phylum Platyhelminthes. So when we are moving from lower phylum to higher phylum, the body organization, the development pattern in body is increased. Means the body is well developed. Then the organ system level of organization. When different in higher animals, organs are associated to form functional system, and each system concerned with special फिजियोलॉजिकल फंक्शन. जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल से बता रहा हूँ. हमारा ह्यूमन में एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. एक सिस्टम है व्हाट? इन आज एग्जाम्पल विल टेक हियर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एसोसिएटेड है, जैसे कि माउथ, oesophagus, then stomach, then intestine, then different glands like pancreas, liver. These all are associated with the digestive system, and they are all these organs. Common function is to help in food digestion. Another example we can take. Is respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन एसोसिएट है, जैसे कि हमारा नोज है, एपिग्लॉटिस है, देन विंड पाइप है, देन लॉन्ग्स है. लॉन्ग्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन है, वेसिकल्स है. दीज ऑल आर एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देयर में फंक्शन इज व्हाट? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग.
This is the common function of a respiratory system. So when different organs associated with each other and they perform a common function, this type of body organization is known as organ system level of body organization, and it is mainly noticed in uh, phylum. This is mainly noticed in phylum Aschelminthes, Aschelminthes to chordates. To chordates. This type of body organization we can notice from Aschelminthes to chordates. Then the next feature, what we wrote, uh, pattern of a complexity of various organ system. Pattern of a complexity of a various organ system. And we'll today हम आज यहाँ पर स्टॉप करेंगे इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम पैटर्न ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम यहाँ से शुरू करेंगे और एंड विल कंप्लीट ऑल बेसिक फीचर्स ऑफ अ क्लासिफिकेशन जितने भी बेसिक फीचर्स मैंने बताया जैसे कि पैटर्न इन कॉम्प्लेक्सिटी इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम देन विल स्टडी अबाउट body symmetry, then we will study about germ layer, then we will study about coelom, then we will study about segmentation and about the presence or absence of notochord. We will study in detail about all these characteristics and आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगा हमारा कंटेंट अच्छा लगा अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू ऑल ऑफ यू सी यू सून in next class.